Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Children are like emotional sponges. They absorb not only what parents teach them through words but also what parents demonstrate through their emotions, behaviors and relationships. बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सीखते, वो हमारी भावनाओं और व्यवहार को भी आकस्मक कर लेते हैं. The way parents handle stress, love, conflict, communication, and self worth often becomes the blueprint for a child's future relationships. माता पिता जिस प्रकार प्रेम, तनाव, झगड़े और भावनाओं को संभालते हैं, वही बच्चों के भविष्य के रिश्तों का नींव बन जाता है. Children feel what parents feel. Even when parents try to hide their emotions, children often sense tension, anxiety, anger, fear, emotional distance, unspoken conflicts. भले ही माता पिता अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करें, बच्चे घर की ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं. A child may not understand the reason behind the tension, but they can feel its effect. So, how emotional patterns pass down? भावनात्मक पैटर्न कैसे आगे बढ़ते हैं? फर्स्ट इज थ्रू ऑब्जर्वेशन. बच्चे देखकर सीखते हैं. चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग. इफ दे सी respectful communication, healthy boundaries, kindness, emotional honesty, they are more likely to develop these qualities themselves. बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं. सेकेंड, थ्रू इमोशनल एटमॉस्फेयर. घर के भावनात्मक वातावरण से. A home filled with constant criticism, fear, fighting, emotional neglect can affect a child's confidence and emotional security. A home filled with love, support, understanding, appreciation helps children feel safe and valued. Third, through unhealed wounds. अनसुलझे भावनात्मक घावों से. Parents often unknowingly pass on their own fears and wounds to their children sometimes. For example, fear of rejection, fear of failure, low self esteem, trust issues, emotional suppression. जो गांव हमने स्वयं नहीं भरे, वे अनजाने में अगली पीढ़ी तक पहुंच सकते हैं. Healing ourselves is one of the greatest gifts we can give our children. Science children may be absorbing emotional stress, sudden mood changes, anxiety or fearfulness, anger or irritability, withdrawal from family, difficulty expressing emotions, low confidence, sleep disturbances. Children often express emotional stress through behavior rather than words. Relationship healing between parents. Children benefit greatly when parents communicate respectfully, resolve conflicts peacefully, express appreciation, apologize when wrong, support each other emotionally. जब माता पिता एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी स्वस्थ रिश्ते बनाना सीखते हैं. डेली पेरेंटिंग हीलिंग प्रैक्टिसेस. फैमिली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. एवरी नाइट शेयर वन थिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर. रोज रात को एक ऐसी बात साझा करें जिसके लिए आप आभारी हैं. पॉजिटिव वर्ड्स. स्पीक एनकरेजिंग वर्ड्स टू योर चाइल्ड. I am proud of you. You are loved. You are important. सकारात्मक शब्द बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं. Emotional checking, some things you can do. Ask, how are you feeling today? Listen without judgment. Children need to feel heard, not fixed. Heal yourself too. Parents often focus entirely on their children and forget their own healing. Remember,
A healer parent creates a healthier emotional environment. A healed parent creates a healthier emotional environment. एक स्वस्थ और भावनात्मक रूप से संतुलित माता पिता ही बच्चे को सबसे बड़ा उपहार दे सकता है. Healing affirmations for parents can repeat daily. I create a safe and loving environment for my child. I heal my emotional wounds with compassion. Love, patience, and understanding guide my parenting. My family is surrounded by peace and harmony. I repeat, my family is surrounded by peace and harmony. मैं अपने बच्चे के लिए सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाता या बनाती हूँ. मैं अपने भावनात्मक घावों को प्रेमपूर्वक भर रही या रहा हूँ. प्रेम, धैर्य और समझ मेरे पालन पोषण का मार्गदर्शन करते हैं. मेरा परिवार शांति और सामंजस्य से घिरा हुआ है. A final message, dear friends. Children do not need perfect parents. They need parents who are willing to grow, heal, learn, and love. बच्चों को परफेक्ट माता पिता नहीं चाहिए. उन्हें ऐसे माता पिता चाहिए जो सीखने, बदलने और हीलिंग के लिए तैयार हो. When parents heal their own emotions, they create a healthier future for their children. Because relationship healing does not start with changing the child. It starts with healing the emotional energy within the family itself. Dear friends, hope you like this video. Do practice it in your family and see the shift and changes within. Till then, signing off, Dr. Swati.